It's one of the world's most important Muslim nations, a nuclear power, ally to the West in the war against terror, and a democracy. But Pakistan is also a country in denial, turning a blind eye to the sexual exploitation of many thousands of poor and vulnerable children. It's one of the most sad and shameful aspects of our society. I have to say I'm totally embarrassed by this, that we have not really been able to protect them. It's going on everywhere, in the big cities or small cities or towns, everywhere this is happening. लेकिन ज़ना सिर्फ मैंने 2 मरतबा की है बस, दोनों भाई थे। अपने जानू भेजा, मेरा पास पैसे भी नहीं था। तुम्हारी उम्र क्या थी उस ज़माने में? 8.5 साल था, छोटा था मैं। आपने तकरीबन कितने बच्चों के साथ ज़िना किया? 1 हुआ था और 10 और 11, 12 तक। It's estimated that over 4 million children across Pakistan are forced to work from an early age due to poverty. Of these, up to 1.5 million live on the streets with no home to go to. For the poorest kids in Peshawar, often the only source of income is picking garbage from gutters and waste dumps for recycling, working up to 14 hours a day for a pittance. دلته تقریبا د 22 سال کباړ کار کوي جی یاره په دا د شپږو کالونو چې ببره شي به دغه کار کوي شاته غریبانان مور او پلار سکول په نشي ویلي نو هغه دغه مجبورۍ نه کباړ ته وځي. Aqib is 9 years old. شپږ بجې راپاڅم او 7 بجې ته کباړ ته وځم. تا نه مور پلار ورځې څو پیسې غواړي کباړ؟ 200 روزانه. که ته دغه کباړ کې پیسې مور پلار ته ورنکړې بیا څه کېږي؟ بیا بس خوښي وکړم. Playing in a dirty, polluted canal might seem danger enough. But for boys like Aqib and his friends, there are other hazards they must face every day. بچې کور نه ته راوځې دلته کباړ پسې تا ته یوازې ډر یارېږې نه؟ یارېږم نه خو زړه مې شینګي چې ملګری ته شریکه مو ټول یو بل سره ګرځو. دا یې تا ملګری؟ جی استویدي څه نوم نو ته؟ ولې هسې مې ښکار لږ خپل ورور. ما ته دا ووایه تا اوس سره چې چا تنګ کړی؟ ډېر. جی تنګ کړی یم. ډبې والا دی، غم والا دی. کله راته ویلي ډبې ته راوخېږه غلط کار کوو. کله راته ویلي یو ډبې راوخې بوتل لرکوي نو غلط کار راسره کوي. ورته خو څه وویل زه به تا کورس سره ګیر خلکو نه یارېږم چې خلک غلط کار ورته کوي. بچی کله چې هغه تا نه موچي غواړي بیا ته څه ورته وایي؟ زه بس کمزلې ورته کوم. The man speaking with the boys is social worker Afzal Shah, one of the very few people trying to protect the street children of Peshawar. ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और पाँच शर्त है बच्चे, 5 शर्त है। रोटियां दरता शर्त ना मिलेगी। न तो वो पनाशी मंदिर आवाड़े बच्चे। अलता मास्टर बलाडशी, इमू अलता तासुदा पारा सेंटर दा ताबख हिफाजत को अलता ताबख ख्याल से तू।
The centre gives a small number of boys the chance to rest and eat a little food, usually just bread in a watery sauce. But there are 5,000 street children in Peshawar alone, most with nowhere to go. 13-year-old Naeem is grateful for even the little protection the shelter provides. ये सारा अच्छा लोग हैं। इस बच्चे का इतना ध्यान रखते, इस नशे से, इस गंदा जगह से उठाते, उधर अपना जगह पर रखते। अब इसका हिफाजत कर रहे। But Afzal's daycare centre is just that. Funded by charitable donations, there's little money, and most kids have to leave and fend for themselves at night. With nowhere to sleep, many hang around the city's main bus terminal, where beds are laid out in the open each evening for drivers to catch some sleep between journeys. This makeshift hostel is run by Hassan Deen. ये चारपाई हम किराए पे देते हैं, नहीं पे हमारा रिज़्क चला हुआ है, बस ड्राइवर रहते हैं। रात को बस ठहरते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं यहाँ पे। ड्रग्स वाले बच्चे जो आपके पास आते हैं? नहीं, यतीम नहीं होते, बस ये घर से भागे होते हैं। बच्चे तो अक्सर आते जाते रहते हैं। बस ड्राइवर्स के साथ क्या करते हैं? मतलब उनके साथ गलत काम होता है, मतलब उनको साथ ले जाते हैं, ज़बरदस्ती ले जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं जाते, बस ड्राइवर जना गुनाह उनके साथ करते हैं। आपके सामने हुआ है? जी, वाकई ये हुआ कि ड्राइवर आए, एक बच्चा सोया था मेरी चारपाई पे, मतलब मेरे साथ, और उसको पहले खींचा उसने, वो नहीं गया उसके साथ, फिर ज़बरदस्ती उसको ले गया। उस लड़की को रोकने की कोशिश नहीं की? उसको एक बंदा ज़बरदस्ती लेके गया? नहीं, कोशिश तो बहुत किया, लेकिन आदमी ज़ोरावर था, मतलब ले गया। बच्चे की उम्र क्या थी? बच्ची की 8 साल। But as we later discover, there's more to Hassan Deen than he cares to admit. Naeem, whom we met at Afzal's day centre, comes here when there's nowhere else to go. इधर मैं चारपाई पे सोया था, 4 बंदों ने मुझे पकड़ा, गाड़ी में बिठाया। एक वो गाड़ी का ड्राइवर था और 3 पौड़ी था। तो उधर चारों ने मेरे साथ ज़्यादती किया। उसके बाद मेरे खून भी निकला था, मैं बेहोश भी था। They're a colourful sight on the roads of Pakistan, brightly decorated by their owners, depicting historical heroes. Trucks and buses are the lifeblood of the Pakistan economy, and Peshawar, just 40 minutes' drive from the Afghan border, is a key transport hub for Central and Southern Asia. But behind the colour lies another story. In towns and cities across Pakistan, much of the sexual abuse of street boys takes place at bus and truck terminals. तो बस इधर माहौल हुआ है कि ठीक नहीं है, सारे अच्छे लोग कम हैं, बुराई वाले बहुत। कि इधर घर के जो हैं 10 आदमी होंगे, बाकी 90 जो है ना ये अड्डे की पैदावार है सारी। छोटे छोटे घर से आए हैं, तो इन्होंने अपने साथ उनको लगा लिया काम पे। When darkness falls, hostel owner Hassan Deen provides an extra service. आपके पास कभी लोग आते हैं पूछने के भाई तुम बच्चे हमारे लिए तैयार कर सकते हो? जी, अक्सर आते रहते हैं। ऐसे होते हैं कि ड्राइवर बस होते हैं, उन कहते हैं कि यार ठीक है मैं आपसे चारपाई लेता हूँ, मतलब 150 आपको ज़्यादा देता हूँ, मुझे कोई लड़का पैदा करके दो।
सर बच्चा ऐसा होता है कि मतलब एक अलग घूम रहा होता है तो उनको हम कहते हैं कि मतलब आपको जगह हम देंगे, आप हमारे पास आ जाओ, आपको खाना पीना हम देंगे। तो मतलब यहाँ उनको इस बहाने पे ले आते हैं आगे, मतलब तो उसकी मजबूरी होती है ना। जी। He also admits to using boys for himself. 2 दफ़ा सिर्फ किया बस। 2 दफ़ा क्या किया? मतलब यही बच्चों के साथ। अच्छा 2 दफ़ा। फिर उससे बाद नफरत हुई। हाँ? फिर उससे बाद नफरत। कितनी उम्र थी बच्चों की? बस थे, एक 8 साल का था और एक मतलब 10-11 साल का था। आपने क्या उनके साथ किया? मतलब उन्होंने पैसे मांगे, मैंने उनको कहा कि पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो चारपाई दे दो, तो मैंने उनको चारपाई दे दिए। दोनों भाई थे तो दोनों ने कहा कि हमें 50-50 रुपए भी दो, मैंने दे दिए दोनों को। और तुमने उनके साथ क्या ज़िना किया? जी ज़िना। At bus and truck terminals across Pakistan, drivers and conductors often keep boys on a permanent basis as helpers or apprentices. There is a culture to have a small child with you, go along with, and it means that the child is kept as a prostitute or as a partner, sexual partner. Human rights lawyer Zia Awan has fought for the rights of abused children for most of his working life. Hundreds of children who are being raped every day, they are being sold, they are being trafficked, they are being forced for prostitution. It's going on everywhere. And people don't believe when we say something, they say that civil society is exaggerating. We are not exaggerating. Denial. It's a taboo subject, but in recent times, articles have finally begun to appear in Pakistani newspapers highlighting cases of child abuse. But Zia Awan claims the problem is hugely underestimated. We are every day listening to children who are being abused, who are on the street or in the school or wherever they are, or in the home settings. So these are tip of the iceberg which is being reported in the media. In one survey, carried out by a children's charity, 95% of truck drivers admitted that having sex with boys was their main entertainment. And some local surveys have estimated that 9 out of every 10 street kids have been abused. If accurate, that puts the figure on a national scale in the hundreds of thousands. कोई गाड़ी वाले को उसको साथ लगा लेते हैं गाड़ी वाला, तो बस ऐसे ही बस उनकी ज़िंदगी गुजरती रहती है जी। जो छोटे होते हैं बच्चे? हाँ जी, छोटे बच्चे। क्या उम्र होती है उनकी? तकरीबन ये 12 साल 10 साल। हाँ ये ख़तरा उनके लिए ये है कि बस वो तो ना समझ है, मासूम है। आपका जो कंडक्टर है उनने लड़के रखे हैं? हाँ जी, बस ये लड़के तो इधर डेली मिलते हैं जी। आज ड्यूटी किए और तो अगर वो शाम कल नहीं आएगा तो शाम को मुझे बोल देगा कि साथ कल मैं नहीं आऊँगा, तो अपने लिए वो लड़के का बंदोबस्त कर देगा। हाँ मुझे बताया था कोई वाक़या हुआ था इस तरह का हुआ था कि वो बचा गया और बस सब ने काम किया था इनके साथ। हाँ वो बस में था, वो बस ये जिनसी ख्वाहिश थी उनकी। हाँ। और उनकी गांड मारी थी उनकी। हाँ मैं भी बीच में शामिल था, लेकिन बस क्या करते हैं उन्होंने खुद बुलाया था, बस वो भी इस तरह का बचा था कि बच्चे ने खुद बुलाया? हाँ। उसके आपने पैसे फिर दिए थे बाद में? नहीं पैसे तो हमने नहीं दिए, लेकिन उस और ड्राइवर ने दिए थे उनको। For Naeem, who himself was raped at the bus terminal, the daily struggle is just to survive. मैं घर से भाग गया, 9 महीने तो हो गया। His parents died when he was 8.
and he's run away several times since. भाई का वजह से मैं घर से भागा। माँ मर गया, बाप मर गया, तो फिर भाई ने मुझे मारा था। Naeem leads us to a part of the city notoriously risky for children. ये ऐसे जगह बहुत गंदा जगह है, खतरनाक। इधर बहुत किस्म लोग आ रहे, नशे भी आ रहे, बच्चाबाज भी आ रहे, बहुत लोग इधर आ रहे। ये इसलिए मशहूर जगह, बहुत मशहूर। Naeem was given drugs by older men on his first nights on the streets. He's now an addict. जब नशा नहीं कर रहे तो फिर सारा वजूद दर्द कर। मेरा अंदर ठंडा हवा जा रही, तो उस ठंडे हवा से मेरा दिमाग पे आ रहे, तो मैं उस टाइम मेरा ये सर पे इतना दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद ज़रा बैठ जाऊँ तो फिर ये चल रहा है, फिर नशा हो रहा है। Pakistan has over 1 million heroin users, and almost 30% of those who inject the drug are HIV positive. Being so close to the Afghan border means that drugs are plentiful in Peshawar. At night, dealers hang around the main bus terminal. बहुत कुछ छोटे बच्चे नशे पर लग गए। नशे पर किसने लगाया? मैंने और लोगों ने भाई लगा दिया है। जब पैसे नहीं हुए तो ड्राइवरों के पास पूरा रात गुजारता है, गांड देते हैं, चुदाई देने, तो उसके 100-120 रुपए देने, तो उसके ऊपर पाउडर पीने। जब आपको कोई छोटा बच्चा पैसा नहीं दे सकता ड्रग के हवाले से, काफ़ी लोग आते हैं, चेहरा हमको आओ जी, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हमको छो दो, लेकिन एक टोकन दो ना। हमारे कोई बच्चे हैं? जी सर जी, एक बेटी, एक बच्ची, एक बेटा, एक बेटी है। आपको ये ख्याल नहीं आता कि ये मेरे बच्चे जब बड़े होंगे अगर इस तरह नशे सही बन जाते हैं? इसका मतलब है आपका बच्चा भी करेगा? बिल्कुल आर्जी तौर पर जैसा करेगा ऐसा करेगा। Aware of the dangers on the streets, social worker Afzal has been trying to get Naeem off drugs for months. क्या ठीक है? अच्छा, आपने नशा लिया है। ये नशा क्यों लिया है? तेरा सर पे ज़्यादा मुझे तो वो फिर निकालते। सर जब मैंने नशा नहीं किया था तो फिर मैं रोटी में नहीं खा सकता। जब आप में नशा आप पर ताकतवर होता जा रहा है, आप को नशा नाकाम के लिए छोड़ेगा। के साथ या अच्छा होता हो या बुरा बाहर, आप मुझे बताओगे। Naeem has promised Afzal he won't take any more drugs today. After the meeting, he asks to be dropped at a local cinema to watch a movie. अच्छा, तुम्हें भी मूवियों में आने का शौक है? बहुत शौक है मुझे। तुम्हारी सबसे पसंदीदा मूवी कौन सी है जो तुमने देखी? मेरा है पखरी अपवानी, ये अच्छा फिल्म है। उसमें देख रहे जो अच्छा कर रहे वो बच जा रहे, जो गलत काम कर रहे तो वो आखिरी में मरते हैं। There are 2 cinemas on this street. इसलिए इस शो में मैं जा रहा हूँ, उसमें इसलिए नहीं जा रहा हूँ। उधर उसमें सारा प्राण लगता है, प्राण लग रहे तो उसमें सारा लोग मुठ मार रहे, कभी बच्चे का बुण मार रहे, कभी क्या कर रहे। तो इस वजह से हम इसमें इसलिए आया। जब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, खाली सिगरेट नशे वाला लोग इधर बैठते हैं। तो अभी तुम जाओगे, तुम कुछ लोग हैं इनके साथ? हाँ, मैं उससे कुछ चर्च से लेना और समरबान। Already, he's breaking the promise he made to Afzal. वैसे बस बदन में खारिश। कल से मैं नशा नहीं कर रहा।
Naeem had discovered a way to pay for his growing drug addiction at an early age. तो मुझे फिर पैसे तोड़ा जाएगा तो फिर मैं अपना जान को बेचता हूँ। पहले मैंने अपना जान बेचा, मेरा पास पैसे भी नहीं था। तो फिर मैंने उधर आदमी से 3 दफ़ा किया था, तो उसने फिर मुझे 3000 रुपये दिया था। तुम्हारी उम्र क्या थी उस ज़माने में? उस वक्त सर मेरा उम्र थी 8.5 साल था, छोटा था मैं। To show how open street prostitution is, Naeem invites us to a busy intersection. क्या खतरा तो नहीं है तुम्हारे लिए? हमारे लिए तो खतरा है, लेकिन मैं आपको बच्चाबाज लोग दिखाता। चेता नीचे वापस आता कमरे पे से बात अगर हाँ या मेरे से और वक्त कुछ बात के रही 1000 रुपये बता 1000 रुपये वाली चाहिए 1000 रुपये भी नहीं लगी कोना ठोला स्पाफा वैसा जागा ना को सुबह पूछ ना मां 1000 बांधे सर ना जम। Over the next 20 minutes, other men try to solicit sex from Naeem. पहले मैंने भेजा था, मेरा पास 2-3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा पास पैसे भी नहीं था। उसके बाद मैं एक रात सारा रोया था। मैंने कहा ये तुमने आज क्या काम किया, लेकिन ये मैंने खुद किया था अपने पैसे के लिए सर। In order to survive, prostitution has become commonplace for many street children. One of Naeem's friends, 12-year-old Saeed, is described as promiscuous by the other boys. ورزال تقاتلوا ما يرالهم في رمرة طاولة مولوسيرا لوري كشنو راځي ما ته وسلو ټموالا بس د پیسو په لالچ کې بوت ما ما وغای بس به مو غول بس کار مې ختم کړو مته بیا سرجي خلک مې غولي خلکو نه. Social psychologist Roxana Malik has counseled street children for the last 7 years. कि जब बच्चा स्ट्रीट पे आता है तो ही माइट नो एक्चुअली कि सेक्स क्या है, और जब वो अब्यूज़ हो रहा है तो शायद वो फर्स्ट टाइम उसके लिए वो स्केरी ज़रूर होगा, बट ग्रेजुअली वो उसका हैबिचुअल हो जाएगा, और तो वो फिर रादर कि वो कहें कि हाँ अब हम मुफ्त में अपने आप को बेचें, अपने मुफ्त में हर एक को अपना आप प्रेजेंट करें, इट्स बेटर कि हम इसी चीज़ को सॉर्ट ऑफ अपने लिए अर्निंग बना लेते. Many adults appear to blame the children themselves. In one study, 1,800 men were interviewed about their feelings towards child sexual abuse. 1/3 of them said they did not consider it to be bad, let alone a crime or a sin. Ghulam Qadri, Deputy Country Director for the charity Save the Children, says much of the problem stems from the past history of the abusers themselves. The people who indulge in those activities, in many cases, they have history.
Many times they were abused as a child as well. So this becomes a routine practice in their life. So they don't consider this as a crime. Yet some of the abusers go to desperate lengths to ensure no one finds out. We conducted a study, and the horrifying figures were that out of every 10 children who were sexually abused, one was killed. The people who commit this crime, to protect their identity, they kill the child after the abuse. Many psychologists argue that the attraction to young boys stems from the rigid segregation of the sexes in significant parts of Pakistani society, where women are perceived as the inferior gender, rarely seen in public, and with very few rights. A 2014 World Health Organization report places such gender inequality at the very top of causes for child abuse. And a recent World Economic Forum report named Pakistan second worst country in the world when it comes to equal opportunities for women. Ijaz, the bus conductor, has strong views on what he believes a woman's role should be. औरत के घर पर रहना चाहिए, बाहर नहीं। औरत बाहर की चीज़ नहीं है, घर पर रखने के लिए। अच्छी सी बीवी देखेंगे क्योंकि उन्होंने कुरान पढ़ा हो और नमाज पढ़ता हो, अच्छी सी तरीके से आया इज्जत की। आपके दीन और इस्लाम बहुत ज़रूरी है ना? हाँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये जो छोटे लड़के हैं आपने इस्तेमाल करते हैं, वो आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है या क्या? बस क्या करते हैं, मजबूरी है ना। वो तो है इस्लाम के खिलाफ है। उस टाइम अल्लाह ताला को बुहारा जाता है, लेकिन बस क्या करें, मजबूर है ना। अगर आप इनसे बात करो तो इसके अलावा फिर क्या करूं, मेरी तो मजबूरी है, ठीक है, दे कंसिडर देयर मजबूरी, मेरी नीड है तो मैं क्या करूं, ठीक है। दो अलग इनके आपको दो एक्सट्रीम्स नज़र आती हैं। एक तरफ तो एक बिल्कुल ही अपने आप को इस्लामिक शो करते हैं, इतना ज़्यादा मजहबी शो करते हैं, एंड दूसरी एक्सट्रीम पे वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ इस्लाम को बहुत ऊपरी सतह पे पढ़ाया जाता है। 5 नमाज़ें पढ़ लो, झूठ नहीं बोलना ये गुनाह है, किसी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखना ये गुनाह है, मगर किसी बच्चे को अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी छोटे बच्चे को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुनाह। Cleric Rahul Amin teaches at the mosque located close to Peshawar's main bus terminal, where much of the abuse takes place. اسلام دا نه غواړي چې یو جنس په بل جنس باندې د پاسه وي بل لاندې وي. دا اسلام قطعا نه برداشت کوي. دا عقل هم خلاف ده، فطرت هم خلاف ده. دغه وجه ده چې د زنا حکم الله بیان کړی دی. اګه سره جو تاسو خبرو کوم کنه د دې غونډو ګناهونه واز دانه تاسو ګور ټول ګناهونه په شاته د الله نه یریدل بس. که یو سړی د الله نو یریږي کنه دا چې الله پاک زور کوي چې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله تاسو الله نو یریږئ. But Roxana Malik claims a culture of sexual denial runs through Pakistani society and that this has led to an increase in abuse. थिंग इज़ कि हमने इस चीज़ को इतना ज़्यादा दबा के रखा है कि नहीं समथिंग गंदी चीज़ है। आप जितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कॉम पैदा करोगे, जितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लोगों में इंड्यूस करोगे, अल्टीमेटली उस फ्रस्ट्रेशन को किसी न किसी गलत तरीके से निकालेंगे और दिस इज़ अ रॉन्ग वे। A 2010 UNICEF report suggests that traditional Pakistani cultural values of purity and protection of women have contributed to men preying on boys. And Ijaz, in his own way, appears to echo that report. हाँ, वो हर जगह आप नहीं घुमा सकते क्योंकि वो हर कोई देख रहा होता है और थोड़ी सी बेकार सा चीज़ है ना, क्योंकि वो शर्मिंदगी करना पड़ता है। लड़का तो हर जगह पहले घर जा सकते हो, इसकी वजह से उनकी कोई मुश्किलात इतना नहीं है। आपने तकरीबन कितने बच्चों के साथ जना किया?
तकरीबन एक वो था और 10 और 11 12 तक। उनकी उम्रें क्या थी? 7-8 साल 10 साल तक थे। छोटे थे। Laws do exist to protect children, but those trying to help say the authorities ignore them. There is no will of the government to implement those laws to protect our children. Imran Khan, a world-famous sportsman, now turned politician, was shocked by the evidence we presented to him, including that some surveys show as many as 90% of street children may have been sexually abused. I must say, I know it happened. I didn't realize it happened to the extent you're saying. It's one of the most sad and shameful aspects of our society. I have to say, I'm totally embarrassed by this figure. And unfortunately, my party has only been in government for the last, 7.5 months, 7 months. And so I've seen the poverty growing in Pakistan, and obviously the children are the weakest members of the society and get hit the most. But those directly involved say one of the biggest problems is that police on the ground don't attach enough importance to the plight of the children. Law enforcers are hardly listening to all these cries which the street child is making. So it's a very grim situation. It's not a very good situation for our children. Often caught up dealing with Taliban attacks, the local police here in Peshawar admit child protection isn't a priority. असल के हालात सीधी मिसाल खबर हमंगा देता न फारे उनको तो फिक्र न दे वाले दमाकी की हालात गड़बड़ दी नो मुंग तो हमारा वक्त न मिला भी से मुंगा माशुमान तो फिक्र सियासत दवा. In the last 5 years, 700 policemen have been killed in terrorist attacks. The amount of terrorism in this country has grown to the point that the security agencies, which are supposed to ensure rule of law, are actually trying to protect themselves. So it's very difficult for them to then go on and protect children, street children. At the day centre in Peshawar, Afzal is becoming increasingly concerned about Naeem. He's discovered that the boy has been harming himself. ये है क्या? ये मैंने ब्लेड से मारा. तो तुमने खुद अपने आप को मारा? हाँ, खुद ही मैंने. It becomes clear he's been doing it for some time. ये कैसे तुमने किया? ये तो बहुत बड़ा गैश है. ये बस मैंने ब्लेड का साथ जोर से मारा. ये बस मुझे गुस्सा आता है बस. मैं तो किसको कुछ नहीं बोलता, फिर मैं खुद ही अपने दुख को मारता. और इसके साथ हमने प्रॉपर सेशन लिया और ये खुद भी यहाँ बहुत ज़्यादा तंग है कि आइंदा भी मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ये पेशावर में रहना भी नहीं चाहता. It's obvious something is troubling him, and Afzal is worried about Naeem's state of mind. Fearing the worst, he confides in us. We ask Naeem. जी हाँ जी. वो रमज़ान से पहले. रमज़ान से पहले उधर एक लड़का था. क्या थी उसकी? उसकी उम्र 10-11 साल थी. हमारे साथ उसको मैंने सिनेमा में लेके गया था. खर्चा मैंने उसका ऊपर किया था. उसने कहा चलो ठीक है. तो सिनेमा से जिस टाइम निकल गया तो उसने कहा नहीं. जिस टाइम कहा नहीं तो मैंने हाथ से पकड़ा. मैंने ज़बरदस्ती से लेके गया था. मैंने लेके गया तो उसके साथ मैंने ज़बरदस्ती से किया. तो फिर The abused has become the abuser. Afzal fears that Naeem is now reaching crisis point, that he's beginning to show suicidal tendencies. नईम तो
काफ़ी अरसा से पेशावर के स्ट्रीट पर रह चुका है और एक डेली बेस पर स्ट्रीट पर बहुत ज़्यादा एब्यूज़ होता जा रहा है और यहाँ उसका ठीक होना मुझे नामुमकिन दिखाई देता है। Afzal believes that Naeem is too psychologically damaged by his life in Peshawar and needs specialist, long-term care. There's nowhere in the city for him to go, no proper government-run facility, and charities are struggling to survive because of lack of funds. तो हमने फैसला किया है कि इसको सोशल वेलफेयर होम शेल्टर के लिए रेफ़र करेंगे। तो हमने इस पे काम शुरू किया कराची में क्योंकि वहाँ बोर्डिंग सिस्टम भी है और बच्चे को अच्छी तरह वहाँ प्रोटेक्शन मिल सकती है। He speaks with Naeem, who doesn't want to leave his friends, but realizes this may be the only chance he has. तो इधर तो स्कूल भी पढ़ने तो फिर भी नशा कर रहे इधर। ये तो ऐसी जगह सा जब इधर से दूसरा मुल्क में नहीं गए तो आप चाहते हैं कि मैं पेशावर छोड़ूं और कराची जाऊं और वहाँ स्कूल में दाखिल हो जाऊं। But Karachi is over 1,000 kilometers away, and to move him, Afzal needs the agreement of Naeem's older brother, Hazratullah, the same man he ran away from almost a year ago because of beatings. ये जब मेरा वालिदा और वालिदा मर गए दोनों, तो बस उसके बाद ये ख़राब हो गया। हमारा मानता नहीं है और मुझे गुस्सा आता है। जब फिर मैं उसे मारता था तो इस वजह से वो भाग जाता था। वो उधर बस चोरियाँ मोरियाँ कर लेता था। छोटो लड़कों के साथ मिलकर वो बस आलू छुपाओ, प्याज छुपाओ। 2 दफ़ा इसको मैंने पकड़ा है, फिर इधर लाया। बार दरख्त इसके बांध लेता, बांध दिए, फिर शाम तक बांधा हुआ था, फिर खोल दिए। मैंने बोला अगर इस बार ऐसा गलती की है ना तो मैंने बोला मैं तुम्हें हलाल कर दूंगा। जहाँ तक नईम ने हमें बताया है वो कह रहा था कि वो अपने जिस्म को भी बेचता था, क्या ये सच है? नईम तो बस गंदा हो गया है ना। नईम तो गंदा आदमी गंदे बातें करते हैं। ऐसा आपको कभी बताया था कि इसके साथ ज़बरदस्ती भी हुई थी अड्डे पे? नहीं जी, तो ये इसका अपना गुनाह है क्योंकि हम तो इज़्ज़तदार लोग हैं, सब अजीज़ तरबूर। ये सारे गवंडीस ये हमारे ऊपर पे हंसते कि कहते तुम लोग कैसे गंदे लोग हो। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इसे ज़िंदा जला देता। Four days have passed since Afzal first raised the possibility of Naeem moving to Karachi. Thinking he'd been forgotten, the boy had begun to despair and returned to drugs. मैंने कहा बस वैसे अफजल साहब गया तो मेरा तालीम नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा फिर नशा तो शुरू कर। Naeem isn't aware that the day of decision has arrived. His brother and another relative show up in Afzal's office to meet with the boy face to face. The social worker who will accompany Naeem to Karachi, if everything's agreed, has come as a witness. دا نعیم دا مو هغه کو تاسو مو کوم د بیا به اوس سکه لکه مشوم خوښ پته لګو سره دا نشینه تخلاص وي مخکې ژوند به تسنګ تیري ندیم متویلو سمو ماته سکول پکار ده کراچۍ کې لکه دا اخته ولته د دیته مو صرف تعلیم ورکو نور د سکار روزگار دا به هیڅ نه کوو ये बहुत बुरा आदमी है ये नहीं मेरा दिल चाहे कि मैं इसको मारूं लेकिन बस तुम्हारे वजह से नहीं मैं इनको छोड़ दूं ऐसे तो फिर नहीं करोगे ऐसे नहीं कि फिर बात करा जाए इंशाल्लाह इस बार मैं नहीं भागूंगा। अच्छा पक्का वादा है अगर आ गए तो फिर मुझे क्या करना है और इतना हम सर निश्चित लगा आगो द सेकंड मुलाकात तड़कीगी ऑब्जेक्शन या एतराज نه نشته او نه تاسو بیا عموما د مطلب د سال ته راپورټ قانوني هغه وکي سره دا مشومي ولې به ولا
لکه مو تاسو په اجازت باندې دا مشوم بیایو جی دا اجازت ته تاسو موږ हाँ ऐसे वक्त गुजारो कि मुझे शिकायत ना मिले सही है For Naeem, at last, there's hope. He's on his way to the drug rehabilitation center in Karachi and now has a future to look forward to. हाँ जी सर, मैं शादी करना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं अपना रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा कर लूँ। तो अपना इलाज मैं पूरा कर लूँ, इसको इंशाल्लाह तालीम हासिल कर लूँ। बहुत अच्छे। तो नीचे से आ रहा था, बहुत मज़ा कर रहा था। जब उठ गया तो नीचे कोई चीज़ मुझे नहीं दिखा रहा था, सारा धूम था। मैं तो इतना खुश था, कभी मैडम से बात करने, कभी किस। Naeem must spend the first week at his new home locked behind bars in the withdrawal room to break the drug habit. He's allowed out for a medical checkup, including an HIV test. मुट्ठी बंद करें। लेकिन एड्स का इलाज कोई डॉक्टर के पास नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हो जो मैंने गलत काम किया, इस पे मुझे बहुत अफसोस। जो मैंने भी किया मेरे साथ भी लोगों ने किया। उस टाइम तो मुझे इतना सोच नहीं था जब अभी आ रहा है। A drug-free week has passed. Naeem has been released from the withdrawal room, but he's confined to his new quarters and now says he regrets leaving Peshawar. इधर तो मेरा दिन बिल्कुल अच्छा नहीं। मैं इधर एक दिन और नहीं रह सकता। बिल्कुल ये ऐसे जगह जब जेल से भी ज़्यादा। जेल में तो फिर भी मैंने कहा चलो घर है अपना, 2-3 दिन के लिए इधर ही फिर छोड़ दे। इधर तो 3 महीने तो मैं इधर नहीं रह सकता। But there's something else troubling him. Today, he gets the results of his HIV test. मैंने भी गलती लोगों के साथ किया, लोगों ने मेरे साथ भी किया। इस वजह से मैं नहीं बच सकता। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बैठो। वो आपको सुन के खुशी होगी कि वो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है? मुझे बहुत खुशी हो गई, मेरा कोई बीमारी नहीं है जी। मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, इसलिए मेरा अंदर अब भी कोई बीमारी नहीं है। मैं बड़ा हो जाऊँ, बस मैं ऐसे हो जाऊँ बच्चों का खिदमत करना, ये जो स्ट्रीट पे होता है।
Naeem is just one example. Hundreds of thousands of others are at great risk every day on the streets of Pakistan. Many of those working on behalf of the children have accused Pakistani politicians of turning a blind eye to the plight of those abused. But perhaps, at last, a champion may be emerging on their behalf. It's really shameful for us that we have not really been able to protect them. So we will have a task force specifically to get rid of this crime. I'm going to have a meeting in a week's time, and I will bring this on. And it would help if your film comes out, because we will use that film and then we'll take action. That action cannot come soon enough. Back in Peshawar, Afzal has received a call. Another little boy has turned up on the streets near the bus station. ये वो बच्चा है जो घर से भागा हुआ है, इसे मैं आपके हवाले करता हूँ. ठीक है. Thank you so much. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़. रज़ा बच्चा. मैं दलता सकोई बच्चे संग रगड़े दलता. ना तके मसरस्ता तंशर मसदत दराला. أروانه كله بس خالد كارينه كله بس زمن رادا.